मतलब Arthur had a different strategy for current affairs, I had a different strategy for current affairs, but we both agree on the fact that it was very difficult to be regular. It was very difficult to keep on writing and focusing on current affairs, right? So ma'am is halving our headache by giving you the notes. So उसका फायदा उठाइए. ये नहीं कि हमने स्टडी टेबल पे पाइल करके वो पूरे फोटोकॉपी प्रिंट आउट्स रख दिए. Read there and please focus on what's being taught in class. So that's what I had to say generally. Now if you guys have questions, you are sure to shoot them at me. And one very very big thing I forgot, answer writing. काफी सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनका इस बार भी मेंस नहीं क्लियर हो पाया फॉर द सिंपल रीजन दैट दे नेवर डिड इनफ आंसर राइटिंग. आई अंडरस्टैंड कि बहुत टाइम कंस्ट्रेंट होता है. वो माई सेल्फ मैंने पूरा बाजीराम से ही कोचिंग करी 1 साल. सो आई नो कि कितना क्लासेस इतनी लंबी होती है कि जब हम वापस अपने रूम में जाते हैं, देयर इज हार्डली एनी टाइम लेफ्ट फॉर एनीथिंग फॉर दैट मैटर. सो आई अंडरस्टैंड कि नहीं होता है, बट फिर भी टाइम निकालना पड़ता है कैसे भी. Because answer writing, it is mains which will either tell you whether you make it to the list or not. Interview will just give you your service कि अच्छा IRS बन रहा है, IAS बन रहा है, IPS बन रहा है. But mains will ensure that you are making it to the list. And mains is all about answer writing. It's not कि किसको कितनी knowledge है. It's all about कौन क्या लिख के आ सकता है. So answer writing is something which you have to practice every other day, if not every day. It is that important. Even Arthur will speak on that when he'll speak after me. So आंसर राइटिंग आप जितना कर सकते हैं प्रैक्टिस. प्लस मैम वाज टेलिंग मी कि मेरे टाइम पे तो एक ही टेस्ट सीरीज होती थी, जो मेंस के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ वो अलग से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते थे. वी वुड नाउ टू मेक यू प्रैक्टिस अभी से इन एडवांस. आई थिंक मैम 12 टेस्ट सीरीज, आई एम नॉट श्योर ऑफ द नंबर. देयर आर 24 टेस्ट इन ऑल. सम आर ड्यूरिंग द प्रीलिम्स ओनली, जिससे मेंस के जो 3 महीने उसमें आपको इतना बर्डन फील ना हो कि यू आर लाइक अब तो बस कुछ नहीं हो पाएगा. So that's how strategy and that's how smart strategy works, that you divide your work कि चलो अभी थोड़ा फ्री टाइम है तो अभी ये थोड़ा कर लेते हैं, फिर बाद में वो कर लेते हैं. बिकॉज वो 3 महीनों में पॉल साइंस के अलावा यू हैव टू फोकस ऑन एथिक्स, GS, essay, and of course focus on your own mental well-being because we are all going mad at during those 3 months. So आंसर राइटिंग अभी से, क्योंकि अभी प्रीलिम्स है, जितना भी मान लो 2 दिन में just take out half an hour and that's enough, so that you get into the flow कि एक आंसर फ्रेम कैसे करता है. And believe me, कभी कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता और कभी कोई क्वेश्चन का the same sentence will never be repeated. Every time there will be a new question. So you need to train your mind कि क्वेश्चन देख के ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में एक आंसर फ्रेम हो जाए कि चलो this will be the introduction, main body and conclusion. This should be your second nature. It should be on your fingertips how to frame an answer and how to write an answer. Mains is all about completing the question paper on time. You will have to complete 25 questions in 3 hours, which is a big task, absolutely mammoth task. और मैक्सिमम लोगों का इसलिए नहीं होता क्योंकि वो टाइम पे पेपर नहीं कंप्लीट कर पाते. ये नहीं कि उन्हें आता नहीं था या कोई और उनसे ब्रिलियंट था, बिल्कुल भी नहीं. जस्ट बिकॉज दे कुड नॉट फिनिश दोस 25 क्वेश्चंस इन अ मैटर ऑफ 3 hours. उसके लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यूल बी इन एन एग्जामिनेशन ओरिएंटेड एनवायरमेंट एंड यूल बी फोर्स्ड टू राइट दोज मेनी क्वेश्चंस इन दैट अमाउंट ऑफ टाइम. So टेस्ट सीरीज को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना if you want to clear things. It's as easy as that and as simple as that, right? So please, if you guys have any questions, You want to ask something? the floor is yours. What was your revision strategy? What was my Revision strategy. revision strategy? As soon as the mains result, as soon as the prelims result came, and you have 3 months left. So मैं क्या करती थी, because you also have to do GS. So my 1 week used to go for GS and 1 week used to go for Pol Science. So I used to devote entire 1 week for Pol Science. और मैम हमेशा सैटरडे या संडे टेस्ट होती थी, मैं टेस्ट देके आती थी उसी पोर्शन का. So मेरा वो पोर्शन रिवाइज भी होता था और टेस्ट भी होता था, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे आई विल स्टडी दैट मच पोर्शन जो सैटरडे को टेस्ट में आएगा. So that was my revision strategy. Because you have to orient your strategy according to the test series. तो और यूजुअली क्या होता है कि आप अगर ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक दिन मैंने पॉल साइंस पढ़ा, नेक्स्ट दिन मैं GS पढ़ रही हूँ. आप अगर 4 दिन पॉल साइंस को देंगे तो एक लिंक बना रहेगा इन दोज टॉपिक्स. सो ये मत सोचना कि चलो आज तो अब तो बोर हो गए पॉल साइंस से, चलो थोड़ा ज्योग्राफी पढ़ लेते हैं. इट विल नॉट वर्क. सो यू हैव टू गिव कम से कम कि एक सेक्शन कंप्लीट हो जाए, क्योंकि एवरीथिंग इन पॉलिटिकल साइंस इज लिंक्ड टू ईच अदर. तो अगर मान लीजिए आप बीच में कोई दूसरा सब्जेक्ट उठाएंगे ना तो कहीं लिंक ब्रेक हो जाएगी और आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. Before prelims, I used to
to like जैसे आज क्लास हुई तो I'll go back home and revise what ma'am taught. But main preparation of course it will be during mains only क्योंकि prelims के पहले हम prelims का ही mindset बना रहता है कि you know we keep on solving those MCQs. But do ensure कि जो आप घर जाके जो भी क्लास पे आज पढ़ा है वो आप घर जाके रिवाइज करें, एक बार पढ़ लें. I think we write 4 to 5 pages of notes every day. Yeah. For prelims. I think economic survey is very important. And I think उसमें सबसे important है इसका first introductory chapter. उसमें basically it encapsulates most of the economic survey. प्लस अगर ऑफ कोर्स इकोनॉमिक सर्वे की इतनी मोटी मोटी किताबें आती है और ऑफ कोर्स हमारे पास अगेन टाइम नहीं होता कुछ पढ़ने का, तो क्या कर लेना चाहिए कि कम से कम हर चैप्टर का है ना ऊपर बहुत बड़ा एक बॉक्स बना होता है जिसमें एक समरी दी होती है, एटलीस्ट रीड दैट. दैट्स द लीस्ट यू कैन डू. प्लस जो आपकी टेस्ट सीरीज होंगी उसमें दे विल गिव यू क्वेश्चंस फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे जो कोचिंग को लगता है कि दिस कैन बी आस्क्ड, सो फोकस ऑन दैट. आई थिंक इंडिया ईयर बुक इतनी रेलिवेंट नहीं है. फॉर द पास्ट 2-3 ईयर्स तो ऐसे कोई खास क्वेश्चंस नहीं आए एंड वो you know honestly book very scary है, you know like so if you have time do it, but I think current affairs में आप इतना focus करोगे कि कुछ भी important होगा तो that will get covered. मतलब personally I don't know what Athar will say about this, but personally I didn't find India yearbook that useful. It's not been updated also for quite some time. Yes. Ma'am, I have your answer, practice answer papers. Yes. Very I hope it was not a bad answer. हम अच्छा वाला answer sheet circulate किया ना. तो इस क्लास में भी नहीं है. say, taking account of general studies paper 1, when they have asked like a history question, You read my GS किसका पढ़ा है आपने? GS पढ़ा है Pol Science वाला? GS का पढ़ा है. Okay. in the first paragraph you have explained about the historical point of view. Then you come Can to you tell me question किस पे था so that I have a brief recollection? example like say paper 2 if it's related to quality. All right. Wherever possible you have written the first paragraph including the political point. Then the second paragraph you have written the social then historical. हाँ. Is it that strategy what you are talking about? It's a cheat strategy. क्या होता है ना जब भी किसी चीज पे ज्यादा आता नहीं है ना, try to analyze कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है, इसके political implications क्या होते हैं, इसके economic implications क्या होते हैं, and देखो जैसे you got impressed ऐसे लोग impressed हो जाते हैं. So that's a cheat strategy. You can also use it whenever you don't know much about something. Even in the essays also you have explained beautifully like Thank you so much. Yes, essay पे तो it's not a cheat strategy, it's a very good strategy actually. Essay पे, why? Because in the essay what they are really looking for is not how intelligent you are or how much you know. All they are looking for is आप कितने multi-dimensional thinking रखते हो. You know, are you capable of thinking like every section in society? Are you capable of looking at all points of view? Because we are a democracy, we are the world's largest democracy and we have so much diversity. Every person has a different opinion about every matter. So all they want to see is are you flexible enough and are you willing to concede that there are multiple points of view. So essay में it's a very good thing कि कोई भी topic है, analyze it from a political viewpoint, analyze it from a sociological viewpoint, philosophical, psychological, individual के लिए क्या implications है, society के लिए क्या इसके कोई economic implications है, क्या international relations पे, and bam, you have a very big essay also. And you know, people are impressed कि वाह हर तरफ से analyze करते हैं. So it's a cheat strategy, सब पे work करता है. Yes. मैम वो जो आप कह रहे हैं ऐसे में ये सोशल वगैरह है, तो ये सारे पॉइंट हमें अलग से सब टॉपिक के लिखने पड़ेंगे कि सोशल इम्पैक्ट उसके बाद पूरा डिस्कशन फिर छोटा सा पॉलिटिकल इम्पैक्ट फिर डिस्कशन या फिर पूरा नहीं एडिटोरियल टाइप. essay is a free flowing writing exercise, so you never make points. ये आप probably question answer format में दे सकते हो, but in essay it has to come in one flow only. तो आप क्या पैरा चेंज करिए और लिख दीजिए politically falling whatever, but no headings, no, that gives a bad impression because essay is all about free flow writing. How to make notes for optional है? Optional के तो you're getting notes मतलब GS के see what I used to do is एक तो I think all of you must have got previous year question papers चाहे वो Pol Science के हो या GS के हो. अब for instance आज economics की class है and we have studied monetary policy of India. ठीक है? Now of course sir या जो भी पढ़ा रहा है they must have given you 2-3 pages of notes. ठीक है? You read that and then look at the previous year questions asked on that topic. उसके according you will yourself get an idea that what kind of questions can come from this topic.
So don't worry. Just always keep a track of what has been asked previously to get an idea कि अच्छा इसमें important क्या है इस topic में. ठीक है? You can also look at the yellow books if you have. ठीक है? But previous year question papers are sufficient. Yellow books कोई छूता है वैसे? He touches the yellow books. ये मैंने भी छुआ था. No, good. Very good. Yes. For current affairs coverage, is it good to write and practice or just read from the books? And is it This question depends from person to person. I was a person and I think even Athar was a person जिसको लिख के याद होता था. कुछ लोगों को पढ़ के याद हो जाता है. So it all depends how you can memorize. I don't understand. Oh, I'm so sorry. It all depends from person to person. For instance, for both me and Athar, we were people who could only memorize when we had written in our own handwriting. But for others, it's okay. They memorize it very quickly if it's written in text format also. So it depends on how you memorize. But it's not possible without writing. I still, today only, I write everything. Then only I am able to. Same here. But I have wouldn't say. मतलब- never understood how you can do it orally. When you write, then things go, your ideas get structured. So writing is ultimately most important thing. Yes. Without writing, nothing will be absorbed, and after writing, you'll get to know that this much is what work I have done. Writing is. In very fact, it's a important. scientific fact that if you have to memorize anything quickly, you will memorize it more quickly if it's in your own handwriting, not even in someone else's handwriting. And text format तो बहुत difficult होता है, but still everybody is different, so I'm very cautious when I say this. Thank you. Yeah, I will just take his question. आप प्रीलिम्स के लिए जब पढ़ रहे हो ना, मतलब एक सब्जेक्ट कंप्लीट Yes, किया, yes. तो उसके लिए प्रैक्टिस करना रहता है, तो बेस्ट सोर्स कौन सा रहेगा? मतलब क्लैरिटी चेक करना है सब्जेक्ट पे कितना कमांड आ चुका है आपका. या तो प्रीवियस ईयर जो MCQs आए हैं वो करिए, या जो क्वेश्चन बैंक होगा इन द येलो बुक्स वो करिए. मतलब यू वांट टू प्रैक्टिस देम. व्हाट इज योर क्वेश्चन? क्लैरिटी चेक करना है तो प्रैक्टिस ही करना है ना. Yes. So I think either you buy a question bank which is topic wise. तो जैसे आपने कोई भी एक टॉपिक किया तो उसी टॉपिक के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, so you will be able to revise and practice also. And always keep up. She has come up with some MCQ tool where you can just enter the keyword, all MCQs related to that keyword. Okay, will be then displayed. now that's wonderful. That's something at your fingertips. So what you can do is log on to the website, enter the keywords. See, again we'll take the example of monetary policy. You've studied monetary policy and you want to practice and revise. Monetary policy, you type in the keyword and all the questions over the years which were asked just on monetary policy will come up. And they were UPSC level questions. So you will automatically test yourself how well you have understood the topic. Yes, sir. आपने अपने वीडियोस में ये said many times that you have made short notes out of the notes which you have studied. So does that strategy you also did for GS mains also? As in जितना भी GS के topics थे The thing which you are talking about is, for instance, जैसे in GS or even in pol science, एक topic का we have 7-8 pages of notes. Now when for your own quick revision, I used to write the important points say in half a page and just stick it on that area, on that section only. कि जब मुझे मान लो कल एग्जाम जाना है and today I want to quickly revise it, so I can quickly read that brief note and that will help me memorize all that was written in those 8 pages. So that's for quick revision. But that's at a very later stage when you have examination just 1 week later. So that is for very quick revision just 1 week before the examination, not in general. इसमें आपने GS mains के लिए मतलब क्या study material would you prefer? GS means के लिए study material. I was a Vajiram student and I did everything that was taught in class. Plus of course there are basic books जैसे we know कि history है so we have to do Bipin Chandra. ठीक है, we know कि geography है so we have to do class 11th and 12th की NCERT. So there are basic foundation books which everybody does. So even I did those. Yes. Ancient history, medieval history, culture. Ancient history में Ancient history, medieval history और culture में कहीं याद नहीं रहता. honestly I did not do medieval history. मतलब क्या होगा, it's like an honest confession and I think जो भी select होते हैं सबका एक ना एक टॉपिक पे छूटता है, तो मेरा medieval history छूटा था. So मुझसे वो मत पूछो. Athar will answer medieval history. So I am not going to answer that. Ancient history I did. Ancient history के लिए class 12 की old NCERT. You just rectify it from cover to cover. वो कर लीजिए. And आजकल in fact they are not even interested in political history कि किसने किसको किस दिन पे कब मारा. They are more interested कि what are कि अच्छा हाँ culture oriented कि
फॉर इंस्टेंस बुद्धिज्म है तो बुद्धिज्म की वो पूछेंगे ये स्तूपा कहाँ है, इस रेलिक का इंपॉर्टेंस क्या है, तो दिल बी मोर कल्चर ओरिएंटेड. सो ट्राई टू फोकस लेस ऑन द पॉलिटिकल हिस्ट्री, मोर ऑन द कल्चरल हिस्ट्री एंड सोशल हिस्ट्री. वो ये पूछेंगे कि ऋग्वेदा और लेटर वैदिक एज में कास्ट सिस्टम में क्या फर्क था. सो कल्चरल सोशल ओरिएंटेड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादा. एंड आई थिंक आर्ट एंड कल्चर के लिए, आर्ट एंड कल्चर इज अ वेरी ट्रिकी एरिया, लाइक उसका कोई प्रॉपर सोर्स नहीं है. बट जो क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी आती है फाइन आर्ट्स की, देयर इज अ सब्जेक्ट नोन एज फाइन आर्ट्स जो बहुत ही सिलेक्टेड स्कूल्स में पढ़ाया जाता है. फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी आती है 11th एंड 12th की, दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर आर्ट एंड कल्चर एंड इट्स ऑथेंटिक बिकॉज इट्स फ्रॉम एन एनसीईआरटी एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस कम फ्रॉम देयर. इवन ये लोग बाजीराव में भी जो क्वेश्चन देंगे ना वो भी उसमें से देते हैं. So you know just हाँ तो you know you buy those NCERTs and NCERTs are very cheap, so and it's a very good source also. अच्छा, another thing which reminded me, when you go for the prelims का test ना, test series अभी बाजीराव में, they'll give you very less marks and you will feel very demotivated. You will feel कि अब तो जब इतने कम है तो हो ही नहीं सकता. But you know सबके कम आते हैं, so don't feel demotivated at all. क्योंकि I used to get very demotivated, so this is one lesson I can give you. They do not reflect a, मतलब of course they reflect कि तुमने वो portion अच्छे से किया है नहीं, but they do not reflect whether you will make it or you will not make it. पता नहीं ऐसा theories चलती है कि जो टेस्ट सीरीज की रैंकिंग आएगी उसमें जो फर्स्ट 500 में आएंगे उनका सिलेक्शन पक्का है. ऐसा कुछ होता नहीं. ओके, so just do continue to do hard work, but that those theories are not true. बहुत अफवाहें चलती है बाजीराव में. Environment and ecology is a very hot area. इससे बहुत क्वेश्चन आएंगे सभी बहुत साबित रखे आएंगे. So I think this is one of the most neglected areas and you have to do it. Where to study from? I did it from there's this green book Shankar की उन्होंने एक निकाली हुई है. That's a very good book. Is there sufficient? देखो ऐसे nothing is sufficient in UPSC, but it's a good book to go with. I did it from there and I did well. I did okay. So Did you make notes from it? Shankar IS? you have to make notes from everything. You just have to, and that is the rule of life in UPSC. मैम क्या होता है आप मार्क तो कर लोगे, you will underline in the book, but you know when tomorrow is your exam, you just can't read everything from the book. You need something written in your own handwriting कि ये important था वो important. It takes time, but everybody has to do it. You wanted to ask, yes? Somebody wanted to ask. Back side. Economics. Economics is also very troublesome area. There's no good book in the market. I think focus on. I can't see her actually. No, that's it. I just wanted to. She can see. Yeah. So focus on the class material. Go through the yellow books if you can. But more, I think more of what will be important this year and for the coming year is what is going on in the current affairs with relation to economics. So जो बाजीराम की बुकलेट्स है करंट अफेयर्स की, उसमें इकोनॉमिक्स का सेक्शन है, वो यू हैव टू डू इट वेरी वेल. जितने भी क्वेश्चन आते हैं इट्स मोस्टली रिलेटेड टू व्हाट्स हैपेंड. कंसेप्चुअल क्वेश्चन थोड़े कम हो गए कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, एवरीबडी नोज व्हाट इज दैट, नोबडी इज इंटरेस्टेड. बट व्हाटएवर इज गोइंग ऑन, कोई फिनोमिना चल रहा है या इकोनॉमिक सर्वे में सम वेरी glamorous term they have used that they may ask. So mostly current affairs, try to basics तो of course clear करने होंगे. By chance एक आधा question आ गया basics पे, but it's unlikely, but still do it. And for that class material is sufficient. But I would suggest everybody कि current affairs पे ज़्यादा focus करें. मैम अगर करंट अफेयर कर रहे हैं तो द हिंदू जब करते हैं तो लगता है कि मतलब वी आर मीटिंग. यार हिंदू अब कूल लग रहा है. मतलब मैंने अभी कल ही देखा हिंदू वाला, मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ने लग गई थी आफ्टर I got selected. But मैंने फिर अभी हम लोग कल ही परसों ऐड देख रहे थे, हमने कहा अरे वाह हमारे टाइप के तो नहीं था ऐसा पेपर. I just want to interrupt Yeah. for current affairs because it's a very challenging task and you do not have that much time. So I have started that current affair initiative where I prepare the topic. You will have previous year questions related to topic. You will get to know which topic is where in the syllabus. Suppose it is on disability, is it in paper 2 and all, and some probable questions also. So you can visit, I'll tell after this interaction, maybe tomorrow and all, I'll give you detail. So you'll get to know, mostly you will not have to waste time. You read newspaper, but don't waste time from